नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सी सून पर। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी हुई हैं जो कि इंडिया की एक पसंदीदा और नामी गिरामी फर्म शरदुल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर है कॉर्पोरेट लॉ में। आयुष, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। और छोटी सी मुहिम जो हमने जारी की है हमारे नए और नवे दर्शकों के लिए, और उन दर्शकों के लिए भी जो कानून से ज्यादा सानिध्य नहीं रखते, पर इस चैनल के जरिए हम कोशिश करते हैं कि हमसे जुड़े रहें और कानून के विषय में और कानून की दुनिया में थोड़ी सी हम जागरूकता बढ़ाएं। तो पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे आयुष। और सवाल जवाब का थैंक सिलसिला यू सो शुरू करने मच। से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, और जो मैं सवाल आमतौर पे लोगों से कहता हूँ, कि आपका जो शुरुआती जन्म रहा कहाँ रहा, आपकी पढ़ाई कहाँ रही शुरुआती, और वो कौन सा मोड़ रहा आपके जीवन में जब आपने वकील बनने की सोची? फर्स्टली जयंत, आई हैड नो आइडिया तेरी हिंदी इतनी अच्छी है। ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया। नो, फैंटास्टिक मैन, रियली। ओके, सो जन्म कहाँ रहा इज अ strange question to start with, but yeah, I was born in Jammu. Me and my brother both. We are from Delhi, born and brought up here in Delhi. I was in DPS Mathura Road. Studied with you in Amity. Past exams, a lot of them thanks to you in Amity. जरूर, आपकी अपनी मेहनत भी रही। पर Reading ये your बताएं, notes. एमिटी में आने से पहले वकील बनने का आपने कैसे सोचा? Actually, my dad, मेरे पापा जो है वो he was a criminal lawyer in Patiala House and High Court. So I think 9th standard या किसी में मैंने डिसाइड कर लिया था या तो डेंटिस्ट बनना है या वकील बनना है। इतने अच्छे नंबर आए नहीं कि डेंटिस्ट बन पाऊं, तो वकील वकील बन के तोड़फोड़ करें, ये भी ठीक है। नहीं, आइडिया तो यही था कि क्रिमिनल लॉ में घुसना है पापा की तरह। Until I think third year of college तक I was convinced कि हाँ criminal law ही करना है। जी। And then I think things evolved over time. More situations came up, more opportunities came up, and then based on that, I realized corporate law is perhaps a better is better for me than criminal law. जी, तो बड़ा अच्छा आपने सफर बताया कि फादर साहब आपके फौजदारी के अच्छे वकीलों में से उनकी गिनती होती थी। मुझे भी पता है, क्योंकि एक अनुभव रहा आपके थ्रू मेरा उनका केस करने का। बताना चाहेंगे कि आयुष के फादर फौजदारी के बहुत उत्तम वकील थे, और कुछ सालों पहले उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद आयुष के थ्रू मुझे एक मैटर मिला, उस मैटर को आगे बढ़ाने के लिए, और ईश्वर की कृपा रही मैं समझता हूँ उस मैटर में, कि हमें एक अच्छा उसमें रिजल्ट, एक नतीजा मिला। और कई बार ऐसा लगता है आयुष मुझे कि हम बतौर इंसान तो अपना फर्ज निभाते हैं, बतौर वकील भी जो केस हमारे पास होते हैं कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं हमसे। और आपसे जो मुझे वो केस मिला, मैं समझता हूँ अंकल की वो श्रद्धांजलि रही मेरी तरफ से एक तरीके की। तो वो मैं समझता हूँ काफी भाग्यशाली मैं रहा उसमें, और उनसे आपको मैं समझता हूँ जो एक सीख मिली वकील बनने की, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। पर ये आप मुझे बताएं, क्योंकि लॉ स्कूल की लाइफ में before you say before you say a question, I have to say to your viewers कि Jayant is being very modest here. जो client है, जो मेरे dad के client थे, I think that case was going on for a good 15 years if I'm not wrong, or more maybe. जी जी, 15-17 साल का केस था वो कम से कम। And जितना human, frankly, the client was so happy thanks to Jayant, and he got the relief. बरी हो गए थे वो eventually, and all thanks to Jayant and his efforts. He really the client called me up and thanked me for introducing you to him. He was almost indebted, and the way the kind words that he said about Jayant are phenomenal. So Jayant, you're being very modest by saying no, but I'll tell you lucky रहा something. and all of those things. क्योंकि जो पुराने वकीलों का जमाना था, मेरे को जो उससे सीखने को मिला, क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा सा सवाल जवाब शुरू बाद में करूंगा, एक क्योंकि इससे इतना अहम केस रहा। एक तो कोविड के चलते जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ तो हमने इसका फाइनल आर्ग्यूमेंट किया पटियाला हाउस कोर्ट में वर्चुअली, तो एक तो ये नई बात थी इस केस में। दूसरा, जब मैंने फाइल खोली तो मैंने अंकल के इसमें हैंड रिटन नोट्स पाए कुछ, और जब मैं डेपोजिशंस पढ़ रहा था एक दो, तो मैंने कहा यार ये चीज मुझे चमकी नहीं इस टाइम पढ़ते हुए, क्योंकि मैं भी अपने आप को ट्रायल का वकील समझता हूँ और फौजदारी करता हूँ। तो मैंने कहा यार ये मैं पढ़ तो रहा हूँ, पर कितनी खूबी से उन्होंने हल्का सा साइड में एक हैंड रिटन नोट बनाया हुआ था, और मैंने कहा ये कितना अच्छा सवाल है, बिकॉज ये एक मेन आई विटनेस का वो सवाल था। और जब मैंने उस सवाल को पढ़ा, मैंने कहा यार तो बहुत बारीक सवाल है और ये मुझे नहीं सूझा, और वो मेरे ख्याल से वो सवाल मेरे बड़ा काम आया फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में भी। और जब मैंने इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्रॉस किया तो मेरे बहुत काम आया। तो यार मैं तो कहूंगा दाद देता हूँ मैं उस जमाने के वकीलों की, कि उनमें जो बारीकी होती थी, जो नफासत होती थी चीजों को परखने की, मुझे नहीं पता हम लोगों में वो कितनी है। हम लोग सोचते बहुत अपने बारे में, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं,
10-15 साल की प्रैक्टिस में, लेकिन जो उस किस्म के जो वकील हुआ करते थे जिनकी 30-40 साल की प्रैक्टिस होती थी और उसके बाद भी जो बारीकी होती थी उसको समझने की, मुझे लगता है वो हम लोग की पीढ़ी में कहीं ना कहीं मिसिंग है। खैर ये तो बात हो गई उस हम केस की। 15 साल हो गए हमारे को, मतलब मेरे को 14 हो गए, आपको 15 हो गए 15 हो होंगे गए। क्योंकि एक साल मेरा मास्टर्स में मैंने डाल दिया था वहां पे जी। 14 हो गए, correct. So that's why, you know, having learned whatever I have from him, that's why he sits right next to me in my office, looking over my shoulder more than anything else. That's a wonderful, that's the reason why. Yeah, of course. चलो, let's go into your questions. ठीक है, तो आप फिर अब आ चुके हैं। मैं पूरी कोशिश एमिटी लॉ करूंगा स्कूल पूरे हिंदी में जवाब देने की। हाँ, जैसा हो, पूरी मतलब कोशिश हिंदी करूंगा। इंग्लिश हम लोग मिली जुली भाषा में बात करते हैं। तो अब आप एमिटी लॉ स्कूल में आ चुके हैं, 2002 का दौर चल रहा है, तो ये बताइए जब आप एमिटी लॉ स्कूल में आए, और ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि यंग जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हैं हमारे, और जो अब ग्रेजुएट करने वाले हैं, जस्ट लॉ स्कूल में भर्ती हो रहे हैं, वो बड़ा ये पूछते हैं कि सर कौन सी इंटर्नशिप करें, कैसे इंटर्नशिप करनी चाहिए, फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर। तो थोड़ा आप आयुष अपने बारे में बताएं कि जो फर्स्ट से फिफ्थ ईयर तक आपका सफर रहा लॉ स्कूल का, उसमें आपने किस किस तरह की, एक तो इंटर्नशिप्स की, उनसे आपने क्या क्या सीखा, और जो हमारे जो ये युवा पीढ़ी के बच्चे, उनके लिए आपका एक क्या मैसेज है कि इंटर्नशिप कितनी करनी चाहिए और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। सच बताऊं तो देखिए, मैं अपनी फर्म के लिए, अपनी टीम के लिए, सॉरी, आर यू स्टिल देयर? जी। या मैं अपनी फर्म के लिए, अपनी टीम के लिए रिक्रूटमेंट करता हूँ, एंड काफी सारे सीरीज देखता हूँ मैं, और यू नो, मीट अ लॉट, पर बहुत कैंडिडेट्स को मिल चुका हूँ। एंड द वन थिंग आई हैव टोल्ड एवरीवन, एंड आई वुड लाइक टू से दिस आल्सो, कि जितनी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं करनी चाहिए। एंड इट डजंट मैटर कि आप बड़ी से बड़ी फर्म में कर रहे हैं या छोटी फर्म में कर रहे हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आप इंडिविजुअल किसी लॉयर के साथ कर रहे हैं या सबसे बड़ी फर्म में कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। इट्स मोर अबाउट ए, आपने किस तरह का एक्सपोजर पाया है, एंड बी, कितना आपने लर्न किया है इन दोज इंटर्नशिप्स। कहने के लिए अपने मामा के ऑफिस में लग गए हैं, इंटर्नशिप कर लिए, दैट्स नॉट इट। It's about how much you've learned from that internship and how much you've been able to apply that internship. We've seen some associates who are very good academically, but their experience in internships has been very minimal. In those internships, they've got the best of the best, like the named lawyers whose names will come up, who are known all over the country and some over the world. उनके साथ काम करा है, but सीखा कुछ नहीं है. So that doesn't help. To become someone who is valuable to a firm like ours, you need to have done internships that have taught you well. Your marks obviously matter, but what really matters is what have you learned in those internships. आज के दिन, I recall I was just, and frankly, like you said that how my dad's generation of lawyers was so different. We had an interview round for a third year internship in our firm. We had an interview and I was shocked. My HR team called me and said कि यार ये बच्चों का इंटरव्यू लेना है, थर्ड ईयर में बच्चे हैं, and इंटरव्यू लेना है for an internship in our firm. So these are toppers of a university who will interview. 10 में से 6 सिलेक्ट होंगे, वो आके इंटर्नशिप करेंगे। उस इंटर्नशिप के बेसिस में हम डिसाइड करेंगे who are good enough to come for another round of internship, and उनमें से हम पिक करेंगे कि who is the best to be given a PPO. So that's the level of, that's what you're competing against today. So coming from not a national law school, for example, like we were not from national law schools, and we did all right for ourselves. The reason for that is we learned in our internships more than anything else, and that time the competition wasn't as bad also. Right now it's crazy, but yes, I think doing internships very important, and more important than that is learning from those internships, picking up what's going on, not just doing what you're assigned to do. अगर किसी को proof reading का document बोला, ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के पकड़ा दिया. Understanding what that document means, because access to that document is something that you will not have sitting outside that office. You're sitting in an office, you're doing an internship, you're even doing a proofreading of a document is enough for you to learn from that document. It's very important to do that. बड़ी अच्छी बात आपने आयुष कही कि तरह तरह की लेयर्स हैं, और आप तो खैर इंडिया की टॉप फर्म में काम करते हैं, इतने बड़े आप पार्टनर हैं, तो जो बच्चे इतना कंपटीशन फेस करके आते हैं, आपने एकदम सही बात की कि मतलब हम लोग के समय में था कंपटीशन, में इतना नहीं था, मतलब इतनी, मैं कहूँगा इतनी मारामारी नहीं थी उसमें,
आपकी मर्जी थी आपको इतनी इंटर्नशिप मारामारी करनी है कि नहीं। नहीं। अब तो ये हो गया कि हाँ, लॉ स्कूल भी बहुत सारे हो गए, लॉ कॉलेजेस तो थे ही पहले से जो 3 वर्षीय थे, अब 3 years वर्सेस 5 years का एक कॉम्पिटिशन है, फिर 5 years की अपनी इतनी सारी वो I'm glad कैटेगरीज है। तो I'm सही टाइम glad पे so आप many ग्रेजुएट times कर that रहे हो। I passed out भाई पहले निकले ठीक ही हो गया यार। जी I was competing against people like you man, वही इतना मुश्किल था। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक आप अब आप ये देखिए कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप फर्म के पार्टनर हैं, तो कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूंगा कि I have आपका seen लॉ your स्कूल में YouTube जो एक channel. आपका जो एक लॉ स्कूल में वो था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आयुष की हमेशा रुचि थोड़ी सी नाटक की तरफ भी थी, और हमारे कॉलेज में जितनी स्किट या प्लेज होते थे उसमें आयुष ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों का मनोरंजन भी बहुत किया। तो आयुष, एक मेरा फॉलोअप सवाल आपसे ये है कि वो जो दौर था आपका लॉ स्कूल का और ये जो आज का दौर है, वो स्किट, वो एक जो क्राफ्ट होती है जिसको हम कई बार कोड क्राफ्ट कह लेते हैं, और चूंकि आप कॉर्पोरेट में, वो कितना आपके काम आती है आज के दौर में, जस्ट टू एक्ट एंड एक्ट। um, to be honest, I think the point was कि all of those things helped us get us, me and the team who used to do this with me, एक ना confidence आया more than anything else. See, I don't go to court, right? जी So unlike you, I don't have to go and argue in front of 50 people, in front of a judge, but before 50 people, right? But I think that gave me a lot of confidence more than anything else. Stage fright एक होता है. Also, being in a position where it's not just rehearsed, right? Half the times, and the people I used to do this with, some of them, for example, our Varun Kalsi, used to sometimes say things on stage which were not rehearsed, and you had to just play along at that time. So it was a lot about being in that moment, thinking on the spot and all those things. I mean, very minor compared to as whatever you guys do, obviously. But I think the one thing it helped me with is getting a lot of confidence. More than I was a very different person in school and a very different person when I reached college, or rather when I passed out of college. And certainly confidence is one thing that it gave me more than anything else. कि स्टेज का फर्क पड़ जाता है। आपने बोला कि एक बहुत फर्क गोइंग लॉयर जो होता है, मेरे जैसे जो कोर्ट गोइंग वकील है, हमारी तो मजबूरी है कि हमें बहस करनी है, तो वी कांट अवॉइड आवर ऑडियंस। अगर 50 लोग पीछे बैठे हैं कि 5 बैठे हैं कि 500 बैठे हैं, इररिस्पेक्टिव यू स्टिल हैव टू पुट द केस टू द जज, बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है। पर आप जो इतनी बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, मल्टी बिलियन डॉलर डील्स हो रही हैं, उसमें आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, अपनी टीम से इंटरेक्ट करना है, पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स से इंटरेक्ट करना है, तो उसका जो एक स्ट्रेस लेवल है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? I'll tell you, when you start किसी और college, जब हमने start किया, I started in Bombay, and I started in another very good firm, AZB Partners, and it's a very flat structure there. Everybody is considered more or less an equal in many ways. So you sit in a meeting, whether there's Zia with you or there's Abhijit or this, whoever's there in the meeting with you. The idea is that you can speak your mind as long as you're talking sense, right? So agar there's a structuring discussion happening and you don't have the guts to come up and say your point, then you're just another person who's just attending the meeting rather than driving. More than anything else, I think in a firm environment or in a corporate environment, people are the kind of clients that you deal with are people who already know the law better than you. They've come to you because they can't find a solution. So they're coming to you with a problem which they have already examined internally. They've talked to other law firms, all of those things, and they're coming to you as a boss. Abhi solution nahi. Nothing cookie cutter in that sense. There's a lot of thinking that goes into. There's a lot of out of the box thinking that has to be done at times. And then the idea is that if you're able to contribute in that meeting is only when, or if you're able to contribute to a matter, is when you outshine the others. So as I was saying, when I started with AZB, the idea was that if you're sitting in a meeting and then just taking notes, that's great. But if you have something to contribute, speak up. And I think confidence in yourself matters more than. 2-3 बार गाली भी पड़ी फ्री में बात करने के लिए, but ठीक है, वैसे. इससे मेरा एक फॉलोअप सवाल निकल के आ रहा है आयुष, वो इसलिए क्योंकि आपने एज़ेबी से अपना करियर शुरू किया, और तो आयुष, जैसा कि मैंने आपसे ये सवाल किया कि आपने अपना जो करियर है वो एज़ेबी से शुरू किया, और आपने बताया कि बोर्ड रूम में जब आप बैठे हैं तो बतौर यंग एसोसिएट मैं समझता हूँ कि घबराहट तो होती है,
पर at the same time your lawyers, your seniors expect you to speak your mind. तो वो मुझे बताइए कि, और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि आपने एक इंटर्नशिप भी की थी लॉ स्कूल में AZB के साथ, एंड सब्सिक्वेंटली आपको एक ऑफर मिला वहाँ से जो आपने took it up and you started your career with AZB बॉम्बे. तो जब आप नए वकील होते हैं, जब आप ईयर 1 ईयर 2 एसोसिएट हैं, उस टाइम का स्ट्रेस ज्यादा है या अभी जब आप एक पार्टनर बन गए और आप एक टीम मैनेज कर रहे हैं इसका स्ट्रेस ज्यादा है? बिटवीन द टू व्हिच इज मोर स्ट्रेसफुल? Very difficult question, honestly, because when you're in your junior years, your stress is of two categories. One is कि मुझे कुछ आता नहीं है, and the other is I'm competing against a lot of people who are from all over the country, who are very smart guys, and you're competing against them. There's a lot of competition at that time. AZB especially used to have a lot of competition. So the idea was that आप किसी team में नहीं होते थे. You were in a pool of associates, and partners used to just call you, "Achha, tu free aaja," like that. And over time you build rapport. Your seniors start talking about you and all those things. "Achha, yaar, ye ladka अच्छा काम कर, इसको बुलाओ काम के लिए. ये इसने ये काम किया था, मेरे is good." So there's a lot of competition in that sense. But once you're done with your work as a junior, you go and sleep in peace more than anything else. As you grow senior, there are a lot of other pressures that come on your head. And I think a lot of them are long term. It's not just about wrapping up your work for that day. It stays with you. So I can't say if the stress has reduced. If the stress quantity has reduced, just that the quality and the reasons for the stress have changed. That's pretty much it. But I don't get any easier as you go up the ladder. It doesn't. It gets easier in certain ways, but there's a lot of stress that comes along with the fact that you've gone up the ladder. The air gets thinner up there. जिम्मेदारियां आपके कंधों पे दिन ब दिन बढ़ती रहती हैं जब आप सीनियर हो रहे हैं और बाकी लोग आपके अंडर जूनियर बन के काम कर रहे हैं. तो एक no, but good thing is I have a very good team. So to all to credit to my team, very good. मेरा अगला प्रश्न आपसे आयुष कि इतनी अच्छी टीम के साथ आप काम करते हैं, तो मेंटरशिप का जो रोल है वो एक तो कितना अहम है लॉ फॉर्म कल्चर में? क्योंकि कई बार मैं शिकायतें सुनता हूँ यंग वकीलों से, कहते हैं सर हमें मेंटरशिप नहीं मिल रही, इंटर्न्स कहते हैं सर हमें मेंटरशिप नहीं मिलती, लोग गाइड नहीं करते हैं. तो इससे मेरे दो सवाल निकल के आते हैं. एक, जहां तक इंटर्न्स के मेंटरशिप की बात करें, बिकॉज दे आर द ब्रीड ऑफ फ्यूचर लॉयर्स जो कि फर्म एब्जॉर्ब करती है अधिकतर, या कोई एक लॉ चेंबर उन्हें एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा वही लोग फिर एसोसिएट लैडर से बढ़ते बढ़ते बाद में पार्टनर बनते हैं. तो एक जो मेंटरशिप का है वो कितना एक डेडिकेटेड अप्रोच होती है किसी भी एक बड़ी फर्म की हमारे कंट्री में, और दूसरा कितना हम वाकई में टाइम दे पाते हैं, बिकॉज बिलेबल आवर्स भी हैं, क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन भी है, और फिर एक जूनियर वकील की मेंटरशिप भी इसमें इन्वॉल्व है. तो हाउ डू यू put everything together? Okay, so that's another great question. See, mentorship is, I think, very important. As a senior, from my perspective, I'll start from my perspective that not that I have to do and I don't want to. I have to do it because I want to do it. Because without that, you can't guide your juniors to the right place. The smarter your juniors are, the better your life is. It's very simple. It's exactly like that. Jitna zyada you sit with your juniors, you sort of explain, you make them understand why you're taking a particular approach. Utna zyada they get invested in the matter. They get more invested in the work. They understand it. They feel a sense of ownership to it more than anything else, and they learn faster. Just sort of marking up drafts and sending it back, acha tune ye galat kiya, wo galat kiya, or just sending it out to the client, not allowing so if you expect juniors to only self-learn, then you might have a few stars who will get lost in the crowd. You need to, as a senior, you need to invest time with your juniors. Of course, I can't spend that kind of time with the junior most associate or with an intern. I can't spend that kind of a time. But at the same time, to my to the core team, to my somewhat senior associates and all these guys, you have to invest time with them. You need to talk to them. You need to understand what is their perspective on the matter. You need to give them that opportunity so that A, they learn, B, they find ownership in what they do, and C, more than anything else, they then understand how to do the same with their own juniors. You see, without that, a team is just a band of people who are just
working for the sake of it. You need to work towards a common cause. You need to build camaraderie in the team, and without sort of mentoring your team to do that, it won't trickle down. Self-learning is good, but it's not the end game. You can't rely on that only. From an intern's perspective, when we were interns, we used to work better for those associates, because we used to work for associates, right? When we were interns, I think I used to work better for those associates who would take out the time to explain to me कि मैंने तुझे दिया है document, even if it's for proofreading. I'm like, proofreading is, to my mind, the simplest thing that most interns get, right? If somebody comes and explains to me कि देख boss, इसमें ये हो रहा है, चाहे तू proofreading कर रहा है, पर समझ कि हो क्या रहा है, right? Those were the seniors who I really worked hard for more than anything else, because I wanted to make it a point that, okay, then I felt ownership towards it more than anything else as an intern. Even as an intern, like even this, simplest of jobs, even page numbering, people used to explain ki ho kya raha hai. Those people got the best product from interns, as opposed to someone who would just fling a piece of paper at you, yaar isko padh le. Right? In both situations, you're doing the same thing. You're reading the same damn document, but what you're not doing in the second situation is investing in it. So as an intern also, I used to make it a point that even if somebody is giving me just a document saying, please read, I would go up to them and say, if you can spare 5 minutes and just tell me what's going on. So it's almost like a reverse way of making sure that someone mentors you, in a manner of speaking. But yes, but like you said, sorry, just to complete, but like you said, because time come hai, work stress bahut zyada hai. I mean, we almost rescheduled this call twice today itself, given the work stress. That is a reality. The lockdown has meant that there is less, interaction between people generally. So the mentorship abilities of a senior have reduced, but you need to still take the time and do that effort and do it one way or the other. You have to find a way. I'm struggling with it at the moment. मैं समझ पा रहा हूँ, वो आपके चेहरे पे मुझे थकान नजर आ रही है. फिक्र तो नहीं कहूँगा, थकान कहूँगा. लेकिन होता ये है कि मान लीजिए जब से कोविड की सिचुएशन शुरू हुई नहीं, जब से कोविड की सिचुएशन शुरू हुई है, हमने सबने महसूस किया है कि मेरे भी चेंबर में अब हमने वर्चुअल इंटर्नशिप और फिजिकल इंटर्नशिप को डिफरेंशिएट किया, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली फिर से हम वर्चुअल इंटर्नशिप पे आ गए. मैं खुद ये चीज महसूस करता हूँ कि वर्चुअली कम टाइम मिल पाता है आपको कनेक्ट करने का लोगों से. एक तो क्योंकि आप आमने सामने नहीं बैठे हैं, वो एक ह्यूमन इंटरेक्शन कहीं ना कहीं जो हैंड्स ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो मिसिंग है. तो मेरा अगला सवाल इसलिए आपसे आयुष में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब तो आप पार्टनर बन गए हैं. आपने एक इंटर्न के दौर से लेके एक एसोसिएट होने तक एक पार्टनर की जो जर्नी तय की, और आपने एक बात कही कि जब आप किसी को काम देते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. सो फॉर एग्जांपल, अगर आज आप एक किसी $multi-million डील को हैंडल कर रहे हैं या $1 million डील को हैंडल कर रहे हैं, तो यू एज अ पार्टनर अंडरस्टैंड कि डील को स्ट्रक्चर कैसे करना है, या इस डील पे मुझे क्लाइंट के साथ बिहेव कैसे करना है, उसे बात क्या करनी है. लेकिन आप अब ये समझिए कि जो A0 या A1 या A2 लेवल पे जो बच्चा आपकी टीम में काम कर रहा है, जो आपको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज यू आर टू बिग, ऑब्वियसली यू आर अ पार्टनर, तो एक कहीं डर होता है, कहीं शंका होती है. दूसरा, जो बीच की जो हायरार्की बन जाती है, आपके जो बाकी जो जूनियर एसोसिएट्स हैं जिनको वो बच्चा रिपोर्ट करता है, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं सही करूं, गलत करूं, या मुझे पार्टनर एकदम से डांट देगा. तो जो एक वो जो मैंने मेंटरशिप की बात की, वो घूम फिर के इसलिए इस चीज पे आ जाती है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कानून की या एक डील को स्ट्रक्चर करने की, वो उस बच्चे की नहीं है जो अभी एंट्रेंट किया है. तो उसका फर्क दो तरीके से मुझे लगता है पड़ता है. एक, बिलेबल्स में पड़ता है. दूसरा, अगर वो कुछ गलती करेगा जिसपे उसका सीनियर ब्लाइंडली उस पर बिलीव कर रहा है क्योंकि आप लोग सब स्ट्रेस में है या टाइम क्रंच में है, तो उसका इवेंचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर को लेनी पड़ती है और पार्टनर पे स्ट्रेस आता है. तो इस चीज के लिए क्या सॉल्यूशंस आपने सोचे हैं या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? यार, ओवर टाइम ना, यू नो व्हाट योर जूनियर्स आर केपेबल ऑफ, राइट? योर नेक्स्ट इन कमांड जैसे कहते हैं हम, दे यू नो व्हाट देयर कैपेबिलिटीज आर, देन यू नो एग्जैक्टली वो गड़बड़ कहाँ करेंगे और क्या पॉइंट वो पकड़ लेंगे. एक वो ओवर टाइम ना, यू गेट दैट गट फीलिंग एंड यू अंडरस्टैंड दैट. द ब्लाइंड रिलायंस तो नहीं होती है, बट यस, ओवर टाइम यू बिल्ड दैट ब्लाइंड रिलायंस. क्या होता है कि यू हैव थ्रेशोल्ड्स. फॉर एग्जांपल, वी एक्सपेक्ट कि जो जूनियर मोस्ट लेवल पे है, उसका काम है लॉ, करेक्ट लॉ ढूंढना. जो उसके ऊपर है, उसका काम है वो करेक्ट लॉ जो उसने ढूंढा है, वो मेकिंग श्योर, एक तो वन दैट,
and making sure कि उसका implementation, वो जो analysis है वो कैसा हो रहा है. After that, the partner's job is to make sure that the eventual implementation is not just whether it's a correct interpretation, but also whether it is correct from the perspective of the commercials of the deal. Just telling the client that this is illegal is not enough. You have to tell him this part is not okay, but maybe let's structure it this way. So at each level, there is a different threshold for the expectations from you are different. So to say that, yes, you need to mentor your junior most, yes, but the junior most will never have that level of understanding of the deal. Ki bhai, okay, maybe, we don't have to approach this problem from this perspective or from this perspective. But at the same time, keeping the team in the loop and saying, "Acha boss, dekho, humne ye aise kiya hai because this is happening." At least that junior kid knows कि अच्छा boss, एक minute, there isn't, like for example, I don't do tax law, right? I don't practice tax, like Payal and Sachit and all these guys do tax, right? And they're experts at it. Corporate lawyers seldom do tax law. We have a basic understanding of tax, that's it. We know कि यार एक minute ये तो issue है कोई. We just know that. How to solve it, क्या issue है, what is the exact thing is, maybe we don't know. So that's what we want to inculcate in our juniors also, that boss, when they are reading something like यार ये कर तो रहे हैं और ये allowed भी है, मतलब law में restriction नहीं है तो therefore allowed है, ऐसा अगर ऐसी कोई interpretation दे रहा है, but यार इसमें तो tax issue आना चाहिए. Just the fact that you can spot an issue is enough. It is the partner's problem or the not problem, well, it's the partner's job or the subject matter expert's job to find the solution around that problem. Spotting the issue is step one, and that's what you really need to train your juniors to do. Spot the issue. From our job, from our perspective, it's more about, because we do commercial deals, right? Our job is more to make sure that this happens. Like I used to explain to my dad and all of his litigating friends that I help my clients buy, sell, and invest in companies. That was the answer I used to give when people used to ask me, what do we do? So you guys actually practice law in many ways. We don't practice as much of law as compared to, we make deals happen. We do commercial deals, and we have to make sure that we have to find a way around it in the obviously legitimate, correct way and under law. Is just achieving the end objective by following the law. Right. So it's about our junior lawyers understanding where the problem is and identifying that problem at the right time, more than anything else. जी, आपने इतनी बखूबी से इसको समझाया आयुष, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, एंड बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर विद अ लॉ फर्म, तो मैं एक फर्म के स्ट्रक्चर को, मोडालिटीज को थोड़ा सा समझता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं. तो उसमें कई बार क्लाइंट्स को लगता है कि यार वकील हम पे जबरदस्ती बिल फाड़ रहे हैं, इतने बिल्स कैसे आ गए. तो अब जो आपने जो प्रक्रिया समझाई कि जो पूरा एक टीम एफर्ट लगता है इसमें, चाहे वो A0 लेवल का हो या एक पार्टनर लेवल का हो, बिकॉज एक छोटा बच्चा जो फ्रेश ग्रेजुएट है, जो फ्रेश लॉयर है, वो भी एक कहते हैं ना भूसे में से सुई निकालने वाली बात होती है. जब आप एक डील स्ट्रक्चर कर रहे हो, कौन सा इशू कहाँ क्रॉप अप कर जाए, या गवर्नमेंट ने कौन सा सर्कुलर निकाला है, या गैजेट नोटिफिकेशन उसकी क्या आई है, या क्या नए रूल आ गए. कोविड के मैं तो समझ रहा हूँ कि दौर में हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया पढ़ पा रहे हैं, और कैसे कैसे रूल्स चेंज हो रहे हैं डे इन एंड डे आउट, 24 घंटे में, कई बार सेकंड्स में नए नए रूल आ रहे हैं. तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है, क्लाइंट को समझाना कई बार मैं समझता हूँ मुश्किल पड़ जाता है. तो वो आप कैसे हैंडल करते हैं? जी, thankfully that stage is crossed. Client को लगता था ना कि आप बिल फाड़ रहे हो, वो अब thankfully इतना नहीं होता. Some clients have that, but now most clients that we deal with are sophisticated investors or companies who understand how this works. So that thankfully is not a problem anymore, touch wood. पहले होता था बहुत होता था ये, अब कम हो गया बहुत ज़्यादा पहले से. Also, it depends on how much value you're bringing to the table. Honestly, you know what? And when a client wants his deal done, the kind of money we charge in India as compared to how our foreign colleagues charges, it's astounding, the difference in the value, in the rates, for example. But the value we bring to the table is substantial. Now, for example, today most top tier law firms are running a Singapore practice. I mean, I understand parts of Singapore law now, even though I've not studied outside. So it's just that it's practice that's built up, we've done so many deals now, you understand. So it's about what value you bring to the table more than anything else. So clients don't do that anymore. Client expectations are more around, and what gets difficult to manage in terms of client expectations is more than anything else, timelines. I think it's certain, there are some firms who've created almost
set documentation कि भाई यही है कर लो. Not understanding the nuance of the deal and all those things, which causes sort of problems later on in life. Having a roaring litigation practice in our firm, we frequently talk to our litigating partners to understand कि भाई, you know what, हम लोग ये करने वाले हैं, कोई stress तो नहीं है, कल को litigation में जाएगा तो problem तो नहीं होगी. And they tell us कि भाई देख, we are dealing with this, इसमें ये issue आ रहा है, ये वो, all those things they tell us. So it's almost now practice for us to talk to our litigating colleagues and figure out कि बस ये कर तो रहे हैं हम, ऐसे ऐसे दुनिया भर की इंडemnity डाल दिया ड्राफ्ट के अंदर, सब चल जाएगा ना. And they tell us कि realistically नहीं होगा. Client expectations are more on timelines, working on weekends, as you can see. Yes. And with COVID, unfortunately, some clients are expecting कि घर पे तो बैठो, कर लो ना. ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ अप्रोच है क्लाइंट्स की जी, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप कितने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं. बहुत, I mean, this is quite unfortunate. तो मेरे दो सवाल आपसे. एक तो आप ऑन एन एवरेज एक दिन में कितने घंटे आज की डेट में काम कर रहे हैं, पहली बात. और दूसरा, क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी डील्स में काम करते हैं जो सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी हैं, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? My official answer to your first question is I have a very good work-life balance. Okay. That's my official answer to your question. Very well. What the second answer? क्योंकि आप नेशनल इंटरनेशनल डील्स दोनों देख रहे हैं, then how are you managing time? Because घंटे तो मैं कहता हूँ लोगों के पास 24 ही, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ऐसा इतने बड़े क्लाइंट्स को और अपना पूरी टीम को? Yeah, Dick, I know what you're saying. I mean, sometimes it gets overbearing. Thankfully, I'm in a big firm, so there are a lot of teams who can help out, who you can take help from, and all of those things. Obviously, at times we have people in my team working, very long hours. I'm not going to number those hours, but at the same time, you manage it. Eventually, I think क्या होता है कि even if suppose you are not meeting the client timelines, and this is something I tell all my juniors actually, and it's very important for people to understand that timeline is one thing. Quality of the product should never suffer, no matter what. Absolutely. अगर आप एक draft बिल्कुल time पे दे रहे हो, and our work is different, right? Like unlike you guys, your performance is when you're in front of the judge, really, right? For us, it's not really that. It's a little bit like easier as compared to you. But sending a work product to a client which is correct, rather than something which is quick but incorrect, there is no comparison between the two. You cannot let your work quality suffer. You are known for your work quality, not for your efficiency in life. You will always be known, in the long run, you'll be known for your work quality. Yes, obviously efficiency is important, and you can't take, you can't overpromise clients and then not deliver. Yes, you need to have your expectations set out and all those things, and you need to keep the client informed more than anything else. Because at the end of the day, you are in a service industry. Let's face it. Like there are, as you said, there are so many law firms. There are so many law. There are too many. The competition is crazy, even at the top level. Like I'm in a top tier firm, but yes, obviously there are so many of the firms there, and the clients have choices. The reason why they keep coming back to you, in spite of fighting with you for timelines, etc., is because they understand the kind of quality you bring to the table, the kind of deals that you've done for them. They understand that okay, time lega. Agar suppose he's stressed, he's got too many matters on with him, etc. But whatever comes from his plate is something that that's the value more than anything else. Speed is okay. Speed is not the factor. And if fee is something you negotiate with clients, but now it's manageable. Now it's easier than earlier it used to be. एक मेरा अगला सवाल इससे निकल के आता है आयुष की, काफी आपने कॉर्पोरेट के दायरे किए. एक जो मैं चीज अधिकतर सुनता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो है कि एट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम है, कि अधिकतर हम यंग लॉयर्स का देखते हैं और आजकल पार्टनर्स की भी काफी खबरें आती हैं कि बिकॉज इट हैज, आई डोंट नो इफ इट हैज बिकम इजियर, या एक ट्रेंड बन गया है या ऐसा कस्टम डेवलप हो गया हमारी लीगल इंडस्ट्री में, स्पेशली ऑन द कॉर्पोरेट साइड, की जंपिंग ऑफ शिप्स बहुत देखी जाती है. इस पे आपका क्या? So it's like any other field, frankly. I think legal field has less iteration as compared to most other industries. In the legal industry, 2 or 3 years is not considered that much. It's 3 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे. It's not much. But in corporate field, generally, unless you're talking at the real top level, the
run changes. So I think legal industry is nice where there's attrition. The good thing is really that any top tier firm or any top lawyer, if you open their CV, you'll realize that they have been with the same organization for the longest time. And the reason is that even as a, like I've only worked at 2 law firms all my life. One was in Bombay, cities I moved to this firm. It's not that I'm afraid of change or anything, but I feel that you can add value to yourself at being at the right place. Jumping ship for some amount of money may be logical for some people, may not be. It's a very subjective thing. I don't want to get into a personal issue. Attrition has always been there in the fraternity. I thankfully have not suffered as much attrition in my team as such. But yes, that we have to deal with it, and then you need to make sure that you hold on to your assets, right, in your team. As a manager, it's for you to make sure that your team is satisfied financially and on a work-life basis, that you have to make sure that they feel a sense of ownership over the work. They feel that they are in a good place, they're working in a good place. They feel that they're getting value for their their learning more than anything else, and they're getting well compensated. That's obviously relevant. I'm not saying that people shouldn't quit because even if they're getting underpaid. Of course not. You need to compensate your people at the right place. But at the same time, I think as you grow senior, you realize this yourself. At the junior level, people will switch here and there for for some money. But in the long run, people realize that it's always better to be at one. As long as you're being fairly compensated and have a good life and you're getting respect, I think people don't generally do that. आयुष, नेक्स्ट मेरा सवाल ये आपसे, बिकॉज यू आर अ दिल्ली बॉय और दिल्ली में आपने अपनी अधिकतर पढ़ाई की और उसके बाद आप बॉम्बे चले गए, विच इज द फाइनेंशियल हब. तो क्या एक तो आपने फर्क पाया, बिकॉज अगेन यू आर विद AZB, वन ऑफ द टॉप फर्म्स इन द कंट्री. आप कॉर्पोरेट में ही थे, अभी भी आप कॉर्पोरेट में ही है, लेकिन बीइंग फ्रॉम दिल्ली गोइंग टू बॉम्बे एंड देन कमिंग बैक टू दिल्ली, तो एक तो आपने वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स में क्या डिफरेंस पाया, और दोनों जो आप फर्म्स का जो वर्किंग स्टाइल है, मोडालिटीज हैं, उसमें आपने कितना फर्क पाया? बिकॉज वन इन द फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ you were moving yourself from Delhi to Bombay, and then in the other phase of your life you are coming back to Delhi. तो क्योंकि इसमें आपका करियर ग्रोथ और प्रोग्रेशन भी था बीच में, और हम 2 डिफरेंट शहरों के और उनके 2 डिफरेंट कंडक्ट की बात करें, क्योंकि हमेशा दिल्ली बम्बई की बातें लोग करते रहते हैं. तो आप ये मुझे बताएं, जब आप दिल्ली से बम्बई गए तो वहाँ के वर्क कल्चर, वहाँ के फाइनेंशियल कैपिटल में आप हैं, नर्व सिस्टम में इंडिया के, तो वहाँ का कैसा आपका एक्सपोजर रहा इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग एंड डीलिंग विद क्लाइंट्स एंड कॉर्पोरेट्स, और जब आप वापस दिल्ली में आ गए तो कितना फर्क आप महसूस करते हैं? I think one of the biggest differences between Bombay and Delhi is the quality of Gujarati you have to hear in meetings more than anything else. But that aside, when I moved to Bombay, actually मैंने दिल्ली में internships करी थी, बॉम्बे में भी करी थी, same firm में. एक बहुत बड़ा फर्क ये था कि Bombay firms had the culture of working late hours from the very beginning. दिल्ली में ना उस टाइम इतना नहीं होता था. दिल्ली में also being the financial, Bombay had a lot more work as compared to Delhi, the corporate side. A lot of work. Every single, the biggest offices world have a base in Bombay more than anything else. All of the investments happen there. The Bombay Stock Exchange, everything obviously being there, and all NSE, BSE being there has a huge impact. From a lawyer's perspective, I think the couple of things which I saw in Bombay, which I didn't see in my internships in Delhi, was number one, there was a kind of, I could literally be working on a capital markets deal on day 1 and doing a real estate deal on day 2, doing a PE investment on day 3, doing general corporate advisory, listed, unlisted, all of that. I think Bombay made the quantum of work and the quality of work that you are exposed to is immense. बहुत फर्क था उस टाइम Bombay में. Over time, obviously, Delhi has such big law firms that have come. I mean, they've always been there. I think the Delhi market has, the quantum of deals in Delhi is lower than Bombay, lesser than Bombay. Certainly, Bombay has more deals happening as compared to Delhi. But I think the quality of work now you cannot compare. Now it's the same. I mean, now you won't have to draw that comparison that अच्छा ये तो Bombay firm है, Delhi firm है. पहले फर्क होता था थोड़ा सा,
because exposure बहुत था वहाँ पे. Every top law school used to have their kids go from pehle, at least for corporate work, because the kind of work that was available in Bombay was, there was so much diversity in the category of work that you had. But over time, I think, I mean, obviously Delhi, I work in Delhi now, and the kind of work we are doing, I used to do the exact same kind of work in Bombay. I wouldn't say that that distinction is there any so much anymore, but yes, there is. Obviously the quantum of work in Bombay is immense, and I think the quality of lawyers that I used to work with when I was in Bombay, all of my cousins are partners in various law firms, doing phenomenally well. They're all really great guys who did very well, very smart people. So the kind of competition I was dealing with in Bombay was crazy. And I realized that there were times when we used to do deals with a Delhi firm back then. I mean, that doesn't happen anymore. But back then, when we used to do deals with a Delhi firm, there used to be like two partner over there on the other side, and there was like one senior associate and one kid sitting here and doing the deal. Because the kind of exposure that a Bombay trained lawyer had back then was so much more as compared to a Delhi trained junior. So it used to be in that way. I mean, obviously, I don't want to take away anything from Delhi lawyers because technically I'm one, but at the same time, it used to be a difference. पहले थोड़ा सा होता था, I remember. तो आप क्या एडवाइस करेंगे जो अभी यंग बच्चे ग्रेजुएट करते हैं कि अगर उनको कॉर्पोरेट लॉयर बनना है या कॉर्पोरेट में महारत हासिल करनी है तो बॉम्बे जाके ज्वाइन करें किसी फर्म को, दिल्ली से शुरू करें? More than the firm, I think your team matters. Honestly speaking, I think more than anything else, it's your team that's the right. Firms are good. Obviously, some firms just have great teams, no doubt. Some firms just have great work, but you must do your diligence in figuring out which team you're joining, because sometimes the team really matters. If you just being in a firm, which is a big firm, is one thing, but making sure you're in the right team really matters. So that is not the question. Is it the right team or not? What kind of work do you want to do? If you want to do corporate law, if you want to do M&A, yes, there are great firms in Delhi and there are fantastic firms in Bombay. So can't say that yes, being in Bombay will by default give you more exposure. Being in the team in Delhi will do. Being in Bombay will give you exposure no matter whether you like it or not. Let me put it that way. There's just so much work there. I think that's a very, very honest answer. And let me just put one more question as we're progressing towards the end of the program. कि एक टर्म जो मैंने बहुत सुना जब मैंने अपना करियर शुरू किया, ड्यू डिलिजेंस, ये कॉर्पोरेट वाले बहुत यूज करते थे, यार हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो डीडी या ड्यूटी उसको जो भी कहते हैं, डीडी कर रहे हैं. तो ये एक तो ये चीज क्या होती है ड्यू डिलिजेंस और कितनी जरूरी है किसी भी कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन में, और ये सिर्फ सबसे जूनियर मोस्ट लॉयर को क्यों दिया जाता है टास्क? Okay, it's not correct to say कि सबसे junior most lawyer करते. Everybody has to participate in the due diligence. Due diligence is a risk assessment exercise. So let's say Jayant has this toy making factory which Aayush wants to buy. Jayant and Aayush agree on a price. We shake hands. We tell our respective lawyers, अच्छा यार, Jayant tells his lawyer मेरे को बेचनी है, and Aayush tells his lawyer उसको खरीदनी है. Now, the first thing my lawyer needs to do, or my financial advisor also needs to do, is understand that this value that you and I have agreed upon, is it justified based on the quality of the asset you're selling me? So he will look through so my financial advisor will look through your books to understand कि भाई कोई tax liability तो नहीं घूम रही इस कंपनी के, भाई हमें पता नहीं इसके बारे में. Are there certain customer complaints कि भैया आपके toys बच्चों के गलों में फंस जाते हैं, and there are liability suits on you? Have you made sure that all your corporate compliances are complete or not? Have you made sure that your shares, the ones that I'm planning to buy, are they really Jayant's or have they been pledged to some other bank? So a due diligence exercise is a risk assessment exercise to understand कि boss देखो, the lawyer tells his client, so will tell me that देखो boss, you're going to buy this, very good, that's fine, but these are the 50 problems that I found with it. Now, the question to you, Mr. Buyer, is can you live with these 50 problems? Do you need him to fix any of these 50 problems before you buy? Do you need him to protect you against any of these 50 problems? So let's say out of 50, I say, अच्छा चल यार एक 10 जो है ना,
ये तो जयंत यार तू इसको सॉल्व कर दे before I come in. Let's say there are some you have some pending tax payments that you have to make. Let's say there are some filings you have not done. You know, these kind of things are there, which are solvable. So I tell you, boss, Jayant, एक काम कर, ये 10 चीजें तो कर ले पहले. So those become what you call conditions precedent, right? So these are conditions before I will buy. 40 हो गई 50 में से. उन 40 में से मैं उसको बोलता यार ये 20 तो बहुत ही माइनर चीज है, छोड़ इसको यार, I can live with this, no problem. तो 20 खत्म हो गई. 20 और बची. ये जयंत भी सॉल्व नहीं कर सकता और आयुष भी सॉल्व नहीं कर सकता. तो उसके लिए भी ये होगा कि देख भाई जयंत, आज तो मैं तेरे को दे रहा हूँ ये करोड़ रुपए, बट अगर कल को इन 20 में से किसी पे क्लेम आ गया और मुझे नुकसान हो गया उसकी वजह से, तो तू मेरे को इंडेमनीफाई करेगा फॉर दैट लॉस. कि भाई अगर ये सब, let's say there is a industry wide issue going on, the government and the whole industry, all toy making companies are fighting against the government for a particular issue, ठीक है, and there is no solve for it. But कल को let's say the government says कि नहीं बॉस, आप सबको मेरे को ये फाइन भरना पड़ेगा, all of you put together, and that means I now own the company and I have to pay that damn fine. So I and you have agreed already कि देखो भाई अगर ये नुकसान हुआ तो Jayant, now at that time Jayant can decide नहीं बॉस देखो ये आगे फ्यूचर का है, मैं I can't get into this. एक काम कर, 20 अगर 20 की वैल्यू इस वक्त 20 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए प्राइस में से कम कर दे और जी ले इसके साथ. So due diligence is something that is a risk assessment exercise where the buyer of the asset understands the risks that are associated with that asset. Out of 10 deals, at least 4 deals fall away because due diligence, financial or legal. So 4 deals don't happen because due diligence. And to your question, junior most associate, only the junior most, everybody has to participate. Yes, the heavy lifting is done by the junior most associate because there's a lot of time that goes into reading through these documents, a lot of them. So that's where actually that issue which I spoke about earlier comes in. It's about them reading these documents saying, यार एक सेकंड, इसमें तो लिखा है the company will operate only in Odisha, इसका ऑफिस तो, इसकी फैक्ट्री तो बॉम्बे में, ये क्या हो रहा है? Or you know, there sometimes people write without thinking, they write things in contracts which don't work, and then they point it out, and then we have to take a call. So it's just finding right, which we then highlight to the client, and then the client takes a call. ठीक है यार, जी लूंगा इसके साथ, कोई बात नहीं. Or boss, this is a problem, you have to take it up. So yes, the junior most people are involved in it because there's a lot of paperwork to be handled. That I have a diligence report open in front of me right now on my screen, which I'm going through. Oh. So yes, it's a very important part of the deal. वेरी वंडरफुली एक्सप्लेन आयुष, क्योंकि इतना हार्डेस्ट टास्क है ये. जैसे मैंने बताया कि मैं तो जब शुरुआती तौर पे देखा और आप लोगों से भी जब बात होती थी उस टाइम तो हर कोई कहता था हम ड्यू डिलिजेंस में बहुत बिजी हैं, और आपने बताया कि आपकी स्क्रीन में इस वक्त भी एक रिस्क कंप्लायंस रिपोर्ट में, ड्यू डिलिजेंस के मतलब कहूंगा रिस्क कंप्लायंस रिपोर्ट की जो खुली हुई है, क्लाइंट के बिजनेस रिस्क असेसमेंट टू बी फेयर. तो बहुत बहुत जरूरी आपने ये हिस्सा बताया कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन का, कि अगर जब तक बतौर वकील हम इसको वेट नहीं करेंगे, हम ढंग से इसको कानूनी लेंस लगा के नहीं देखेंगे, तो तब तक बड़ा मुश्किल है क्लाइंट को सही राय, मशवरा, हिदायत देना कि भाई आप इसको करें या ना करें. तो ऐसा आपने जो एक चीज तो कही कि 10 में से 4 डील होती है जो कई बार नहीं एग्जीक्यूट हो पाती हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. एक लिटिगेशन से थोड़ा सा रिमोटली जुड़ा हुआ एक सवाल कर लेता हूँ, तो ऐसी कितनी डील्स हैं जिनमें डील हो जाती है और बाद में पता चलता है कि भाई धोखा हो गया, अब इनको कोर्ट ले जाते हैं? धोखा हो गया, I mean it as a fraud, like धोखा is a very strong word. I have not seen deals where large scale frauds have been found. I have done deals जहाँ पे एक या 2 डील होगी जिसमें बाद में प्रॉब्लम्स आई हैं, but those were problems that were identified before. Unknown problems नहीं आती, unlikely है. आजकल इतने sophisticated buyers हैं, इतनी sophisticated law firms involved हैं, that unknown problems don't have unless there's an active fraud happening. See, छोटे मोटे issues आते रहेंगे, that's okay, that's not a problem. But most times क्या होता है कि एक identified issue होता है जिसके basis पे problem आती है, and then the parties court को आते हैं, कुछ नहीं जाते. Most times, if the value of the issue is not much, people will just settle it, because
unfortunately, it takes a while for you to get your claim eventually. It takes a while. Correct. I mean, I am involved in a few litigations from my firm side. I mean, I do some bit of litigation work from a corporate perspective, and I can see that it takes a while. So breach of contract को claim करना एक चीज है, और उसमें से indemnity प्राप्त करना is a different ball game altogether. But yeah, there are deals that happen, but very few, especially with the kind of stakes that are involved in our deals. We don't miss much. Let's put it like that. That is very well put. Just a penultimate question before I put the session. आपने कई सारे मूट कोर्ट्स किए, आप विदेश भी गए मूट कोर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल मीट्स में आपने पार्टिसिपेट किया. तो हमारे यंग ऑडियंस के लिए ये पूछना चाहता हूँ कि मूट कोर्ट आपके नजरिए से कितना महत्व रखते हैं किसी एक लॉ स्टूडेंट के जीवन में, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या सिर्फ एक घुमक्कड़ी के लिए किए जाते हैं? 100% करना चाहिए, not only for घुमक्कड़ी, but not only for that, but more than anything else, it's certainly 100% करना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है. It gives you so much exposure. आपको पता लगता है कि बाकी लोग कैसे सोच रहे हैं same problem, because you're all dealing with the same problem scenario, right? Correct. In a moot court, what is happening is they're giving you a set of facts that are applicable everywhere, and if you sit and listen to everybody's arguments, you realize कि एक ही problem समझने के लिए और analyze करने के लिए there are so many different ways of doing it. So it teaches you how to think beyond how you're thinking or how you're being trained to think. It allows you to think कि more than anything else, पता है क्या, आप अपने आप को अपने कॉलेज में 30 मार्क का समझते हो, और बाहर जाके जब थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है कि अच्छा यार लोग तो बड़े तेज हैं वैसे. So no doubt 100% करना चाहिए. It gives you exposure, it gives you a lot of opportunities to connect. It's a great networking opportunity also. You meet you meet people from all over the country, sometimes all over the world, and you get to know. And these are people, there are certain people I work with today who I had met in my moot court days, and they are now lawyers and partners in different firms, and I collaborate with them in work. So I've made friendships from that in that manner as well, sometimes more. But more than anything else, it's certainly 100% it's something that you have to do as a law student. 100% you have to put in the effort, and it's not just about attending, or it's not just about trying for it. It's about attempting to win it at your college level and wherever you go. Like, it's putting in that extra effort. I was fortunate enough to work with great people as part of my mooting journey. Some of them have taught me so much back then itself, even my own classmates. And I think that was one of the greatest experiences I had in law school. Very well put again, आयुष. बहुत शुक्रिया आपका. और अंत का क्वेश्चन हम हमेशा पूछते हैं अपने अतिथियों से कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, और मैं जब दर्शक कहता हूँ मैं सिर्फ यूथ की बात नहीं करता, क्योंकि आप अपनी सोच से भी जवान हो सकते हैं. तो हमारे दर्शक जो यंग एट हार्ट हैं या यंग एट माइंड हैं या एक्चुअल यंग हैं फिजिकली, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, आपने स्पेशली 1 घंटा हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, एंड यू स्टिल हैव अ स्क्रीन ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, और आपको अभी भी अपने बिलेबल आवर्स और अपना काम पूरा करना है उसके साथ. तो आखिरी में विदा लेते लेते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? यंग एंड हार्ट को क्या ही मैसेज दूंगा, जो यंग एंड हार्ट है तो उसको तो मैसेज है लाइफ का. Life का क्या मैसेज दूंगा? I have no one to do that. No, but as law students, I think it's very important that you need to, because इतना competition है आज के दिन, you have to stand out. You have to do beyond what is mandated. It's not just about passing your exams. It's not just about scoring well in exams, because trust me, I see series of only gold medal, 8 gold medals, 6 gold medals, वही दिख रहा है, right? You have to do something well beyond that. It's not just about academics. Of course, you need to do well academically, but you need to showcase yourself as someone who's a all-round, it's like you've put in the effort to learn beyond what it was only expected of you. Because this field, especially, so litigation field is a very different field, so I can't comment on that. Corporate field is something that we are looking for people who are willing to learn new things. In college, we don't learn corporate law. Company law is taught to us in a very basic manner.
वो शेयर और डिवेंचर में फर्क बड़े कम लोगों को होता है उस टाइम, फ्रैंकली। शेयर और डायरेक्टर में भी डिफरेंस बड़े कम लोगों को होता है उस टाइम। बट it's not just about to go beyond that, do all of these course. हम मेरे टाइम पे I remember courses होते थे पर हम लोग करते नहीं थे, कौन करेगा, छोड़ना ऐसे करके। एंड नाउ इफ वी सी, अच्छा इसने कॉर्पोरेट लॉ का कोर्स भी कर रखा है, इसने बूट भी कॉर्पोरेट लॉ वाले कर रखे हैं, इसने आर्टिकल्स भी लिख रखे हैं, इसको बुलाओ यार। इट्स अबाउट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू सिट इन ऑन दैट इंटरव्यू राउंड, get that opportunity. Then of course it's about your abilities eventually, yes, but make your CV such that a person has to call you and say, boss तू करा कैसे है, तूने 5 साल में इतना कुछ है। And of course, I mean that doesn't mean that you become a complete nerd. You have to chill in life also. It's college life by the end of it. But yes, you have to make your CV something that's something that appeals to a recruiter. बड़ी अच्छी बात बताई आयुष, होते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, नंबर अच्छे हैं, मेहनत करनी है। बेसिकली अगर संक्षेप में कहूँ तो आयुष का जो मैसेज है वो ये है कि आप ह्यूमन से सुपर ह्यूमन कैसे बने, उस पे ये अच्छा हमारा 1 घंटे का मतलब बच्चे जो तो बड़ी अच्छी बात आपने आयुष में बताई। इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करेंगे और जो हमारे दर्शक हैं उनसे एक अपील करेंगे कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों तक फैलाएं, ताकि जो लीगल अवेयरनेस है हमारे जगत की, चाहे वो लिटिगेशन हो, कॉर्पोरेट हो, इन हाउस हो या कोई और वॉक ऑफ लाइफ हो, जहाँ पे कानून किसी ना किसी बुनियादी तौर पे जुड़ा रहता है, और लोगों तक जुड़े और हमें हमारे देश में और विश्व में एक लास्ट माइल अवेलेबिलिटी मिल सके कानून और जस्टिस के जरिए। आयुष, एक बार फिर से आपको धन्यवाद करता हूँ एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून।